Okay, Huda Zariwala, ironically, Arvind ji has asked for the Ramayan inside jail. But the core message of the Ramayan is that if you do good deeds in this life or the next, you are going to be rewarded. But if you do bad deeds, even your kith and kin are not going to be able to save you. तो अब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे कि कहते हैं, अब जेल में है, you can call it vendetta, but जैसी करनी वैसी भरनी, और ये तो रामायण में बोला गया है. So Padmaja ji, the principle of the presumption of innocence until proven guilty mandates that the mere arrest cannot be the basis of the removal of a constitutional functionary, and that is why the disqualification can only take place upon conviction. Now we have seen that the law of the land is very clear with the president's rule, which could only be proclaimed when no other option is left. So the issue of the Article 356, which is the imposition of the president. You cannot run a government. Just okay, paint a picture for me, Huda Zariwala. Suppose, there is a crisis tomorrow in the city and the chief minister needs to hold a cabinet meeting. How exactly is he going to do it? How? Kal ko baad aa gayi Delhi mein. How is he going to hold a meeting of his ministers? Well, we should not forget this is a government that enjoys the absolute overwhelming majority of the Delhi's legislators. How will you hold a meeting? He is allowed to have 3 meetings in a week. He is allowed to put his signature only on a wakalatnama. You know that any file that goes to the Lieutenant Governor first needs to be signed by the Chief Minister of Delhi. Today, even ek patta nahi hil sakta Delhi mein till the time that the Chief Minister sign is on it. How do you expect the government to function? Well, obviously, Aam Aadmi Party is expecting for the release of the Chief Minister Arvind Kejriwal ji. I mean, we all know that this entire arrest itself is, due to malified intentions. And also, if we take into cognizance the Constitution... He is not going to be released the 15th of April. So Delhi is going to be at a standstill till 15th of April? Well, according to the Article 239AB, only if the courts are satisfied that the situation could arise where the administration of Delhi or any other state for that matter cannot be carried accordance to the GNC-TD Act, then it is necessary for the Chief Minister to be expedient. Otherwise, it is very much possible for the Chief Minister, Arvind Kejriwal ji, to exercise his power, to exercise everything that the government of Delhi requires at this time for the proper administration to be taken through in the jail itself. Okay, before Mr. Sodia comes back in, Gopal Agarwal, if you think that people of Delhi are going to suffer, why don't you put them out of your misery? It is completely within the rights of the LG to ask for President's rule. Why are you making people of Delhi suffer if Mr. Kejriwal is not stepping down? So you are saying and propagating that there should be a president rule in Delhi. That's what Aam Aadmi Party is saying. We are not saying. The thing is, ultimately, LG will decide. Ultimately, they want to play the victim card. I told you that the initial game plan is when they did not get any relief from any of the court in other cases, they knew that they are involved into this criminal activity, and therefore the only way out to get is to go for a victim card, playing a victim card, and therefore he continuously denied the call remand, and he did not attend. So ultimately, Huda Zariwala, Mr. Sodia both want to respond. Victim card, says the BJP. Then he will play a victim card. Now that is the only way. Padmaja ji, there is no provision which says that the government of the NCT of Delhi Act can be barred by the for governance from jail. According to the People's Act, it clearly states that the disqualification of the chief minister or a legislator can happen only if it is convicted of an offense. And there is no such date of conviction. This does not obviously apply to a person who is only accused and has not been adjudged, as guilty by the court of law. So clearly, the government of Delhi, NCR, can very well function in the premises of a jail. And the defining case for this is in the matter of the 1994 SR Bommai case. I mean, the apex court may strike down the proclamation of the president's law
the president's rule if it finds the ground to be malified, which clearly it is in this case. We are seeing a case of political vendetta. We are seeing how one after another, all the leaders of Aam Aadmi Party are being sent to jail. No money trail is established, no proceeds of crime is established. And now the question of the governance running from jail itself, goes on to show that the BJP wants Aam Aadmi Party to be completely out of power before the general elections, which obviously cannot be the case if Arvind Kejriwal ji is not proclaimed as an accused. He is clearly a victim in this case, and as long as he has the authority he's a victim to have the irrespective of popular what the mandate. court has said. Very quickly, Uma Sisodia also wanted to come in, and then Gopal Agarwal. देखिए, मैंने बिल्कुल रामायण के आपने जो बात कही, मैंने उसी को बोला है। अरविंद केजरीवाल जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर रहे, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं। देखिए, जिस तरह की ताकतें इस समय देश में काम कर रही हैं, ऐसे तो आप किसी भी चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री को बिना किसी आरोप के आप जेल में डाल देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि अब आप जबरदस्ती इस्तीफा दे दीजिए। ऐसे तो आप देश की तो ये बात बताइए उमा जी, अगर इनिसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी का ही मामला था, तो बेचारे मनीष जी ने क्या क्राइम किया था कि आपने उनसे इस्तीफा ले लिया? मनीष जी को भी डेप्यूटी सीएम रहने देते। और आप लोग मनीष सिसोदिया से क्यों इस्तीफा ले लिया? मनीष सिसोदिया को भी डेप्यूटी सीएम रहने देते आप, सत्येंद्र जैन को भी मंत्री रहने देते। पहले से ही जेल में है। अब अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं वो जेल में है, लेकिन सरकार जेल से चलेगी, कोई हमें इसमें दिक्कत नहीं है। नहीं, बट फिर मनीष सिसोदिया का क्या क्राइम था? बहुत गलत हो रहा है देश में डेमोक्रेसी। आप कल को आप हिमाचल के मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाने के आपके ऊपर किसी मैम, हमने नहीं कहा। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा तो आम आदमी पार्टी नहीं लिया। हम नहीं होने देंगे। मनीष सिसोदिया का इस्तीफा क्यों लिया? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल नहीं है, उनसे तो आपने डेप्यूटी सीएम पोस्ट छीन लिया। बिल्कुल नहीं, उनका घर भी ले लिया, पार्टी आतिशी जी को अलॉट कर दिया उनका घर। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से जो नॉर्म्स हैं, जो भी हमारे एक जो नैतिक दायित्व जो होता है, हमने उस पर चलने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने तो बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, एकदम गर्दन पकड़ के फांसी पे लटकाने की आप लोगों ने कोशिश की। मुझे लगता है कि गोपाल अग्रवाल, आपने मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, वो चुप रहे। आपने सत्येंद्र जैन को डाला, उन्होंने इस्तीफा ले लिया। आपने संजय सिंह को डाला, वो उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब इट्स टू मच। नाउ दे आर नॉट गोइंग टू मेक ईच वन ऑफ द लीडर्स रिजाइन जस्ट बिकॉज यू अरेस्ट देम। देखिए पद्मजा जी, 2-3 बात मैं बहुत स्पष्ट करता हूँ। इनने कहा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन ने कि बिना किसी आरोप के आप सीएम को अरेस्ट कर दे। ये बिल्कुल झूठा स्टेटमेंट है। पूरी ऑडिट ट्रेल और पूरी ईडी ने जेल डाला, हमने नहीं डाला, ईडी ने किया, और उनके पास पूरे इसके प्रूफ है जिसके कारण उन्होंने अरेस्ट किया। और उसमें 1-1 साल से वो लोग जेल में, जिनको बेल भी नहीं मिल रही, क्योंकि ईडी ने उनके अगेंस्ट इसी केस में प्रूफ दिया है कोर्ट में। तो इसलिए झूठे आरोप नहीं है, बेबुनियाद आरोप नहीं है, आरोप प्रॉपरली पूरे फ्रेम्ड आरोप है। और जिसके अंदर, तो ये पहली बात। दूसरी बात, अब ये मान के चलते हैं कि लीगली ये प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकते, तो फिर अगर इस सिचुएशन में बीजेपी प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा सकती, तो ये बताएं कि दिल्ली की सरकार कैसे दिल्ली के प्रदेश की जनता के हित में ये काम करेंगे? क्या इनका व्यक्तिगत स्वार्थ दिल्ली की जनता से ऊपर है? ये बताएंगे ना। रूल ये कह रहे हैं, they are saying they're going to take it to the court of the people. They have taken the message of मैं भी केजरीवाल, and people have overwhelmingly said कि जेल से ही चले सरकार. Let's see, the people will get a chance to answer in just 30 to 45 days from now. For now, thanks very much, both ladies and Gopal Krishna Agarwal, for joining me.